So once again, good morning everyone present in the session of E-Khel Pathshala. I cannot hear anything. Hello. Yeah, now I can hear. Yeah, okay, fine. So good morning everyone present here. E-Khel Pathshala foundation level course online training program for physical education teachers and community coaches, participants and all the experts. Today we are going to have a day 19th of this program, and today's first session will be on Khelo India fitness application and Khelo India battery of test. And we have amongst with us a very senior, very experienced and very dynamic speaker with us, Sri Sujit Panigri sir. So on behalf of everybody, on behalf of organizers, I extend my heartiest welcome to you, sir. And we have with us Mr. Ankur Sharma. He's also a part of Fitness 365. So participants, let me take this opportunity and introduce our both the experts for the session. So Mr. Sujit Panigri, sir, is CEO of Fitness 365. And he has graduate and postgraduate from BITS Planning. He has 26 years of experience in sports, physical education, technology. He's a GC member at Sports Skill Council, India, and member of CBSE NCRT curriculum committees. He was the additional DG Technology for Commonwealth Games, Delhi 2010. He worked for Atlanta Olympics and ESPN Star Sports. His company, Fitness 365, is the India's largest fitness assessment company. Fitness 365 manages Khelo India Fitness for school-going children, Fit India initiatives, and Swachh Bachche Swachh Bharat program of Kendriya Vidyalaya Sangathan. So, ladies and gentlemen, on behalf of Ministry of Youth Affairs and Sports, on behalf of Education Ministry, Government of India, and Sport Authority of India, Khelo India, and the entire team of E-Khel Pathshala, and on behalf of our principal sir, Dr. G. Kishore sir, and the entire team of organizing from Sai LNCP, I, Dr. Narendra Gangwar, would like to take this privilege as a coordinator to welcome our speaker, Dr. Mr. Sujit Panigri sir. Sir, we are happy and privileged to have you in the session. Thank you so much. Thank you for... Sir, I'll just introduce our another expert, then you please take up. So participants, we have among with us Mr. Ankur Sharma. Ankur Sharma, he is a team member of Sequoia Fitness and Sports Technology. He has worked on Khelo India Fitness Assessment Program. So on behalf of everybody, I extend my heartiest welcome to Mr. Ankur Sharma as well. Welcome. Thank you so much, sir. Thank you so much. Yeah, I also welcome all the participants for the session because you are the key pillar of this event. So once again, welcome you all. आप सभी का स्वागत है और एक रिक्वेस्ट मैं अपने एक्सपर्ट से करना चाहूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि पार्टिसिपेंट्स दोनों लैंग्वेज में प्रिपेयर है. So over to you, please. Thank you so much, Gangwar sir. So I would like to extend my gratitude to LNCP Trivandrum, Ministry of Youth Affairs and Sports, Ministry of Education and Sports Authority of India. So it has been a great privilege to be part of this thing from day one. So without taking much time, so between me and Ankur, so we are going to take this session. So it's going to be in 3 different sessions, session 1, 2, and 3. So we will, in the first session, I'm going to talk about the overall need for this Khelo India Fitness Assessment Program. And then the next session is going to be about registration of school. And the third session is going to be on battery of tests. So this is what we'll do right now. And from 3 to 4:30, we will see how to look at the Khelo India Fitness Report Card and the talent identification roadmap. So this is how the whole session is going to be spread out. So let me start with the session.
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, सुजीत सर, am I audible? पार्टिसिपेंट्स शायद नॉट, कुछ वॉइस का प्रॉब्लम है, हम कनेक्ट हेलो कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। हेलो हेलो, मेरी यस आवाज यस, आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, ओके ओके, सॉरी, एक्चुअली फोन आया था तो ऑटोमेटिकली म्यूट हो गया था। तो हम खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस प्रोग्राम के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें बैटरी ऑफ फिटनेस टेस्ट है जो 5 to 8 ईयर्स के लिए और 9 to 18 ईयर्स के लिए। सो ये पहला सेशन है, सो लेट्स लुक एट दैट। So let's look at why do we need fitness. So इसमें तो let's take some examples. पहला एग्जांपल लेते हैं हिमा दास। वो एक्चुअली असम में there's a small town called Ding. तो she was a daughter of a farmer and she actually moved from football to sprinting क्योंकि उनके पी टीचर ने बोला कि that she is a better sprinter than a footballer. तो पी टीचर ने उनको आइडेंटिफाई किया था at an early age. And at the age of 18 years वो एशियन गेम्स की मेडलिस्ट बनी। कर्नम मल्लेश्वरी उनको हर कोई जानता है। तो शी was again one of the 5 daughters of born in a small place and वो 12 साल में ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया अंडर कोच मिस्टर अपन्ना and she was spotted by साई in 1990। अब वो नेशनल कैंपर ज्वाइन की थी एंड वो बाद में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हुई, 4 वर्ल्ड कप, 2 एशियन गेम्स एंड ब्रॉन्ज मेडल मिला था उनको 2000 सिडनी ओलंपिक्स में। Duti Chand, born in Odisha in a small place called Jajpur, below poverty line, and she was a bronze medalist at the age of 16 years in 200 meters in Asian Games, 2 medalists in Asian Games. तो अगर हम इन सारे लोगों के एग्जांपल्स को देखें तो 2-3 कॉमन एस्पेक्ट्स है। फर्स्ट कॉमन एस्पेक्ट इज कि ऑल ऑफ देम दे वर स्पॉटेड बाय द पी टीचर्स एंड द स्पोर्ट्स कोचेस कि दे आर एक्चुअली गुड इन स्पोर्ट्स। The second thing that we actually looked at is they were all identified at a very early age. So ये बहुत important है कि if we can actually put a program in place जिसमें हम बहुत छोटे बच्चों से छोटे बच्चों को उनका fitness assessment कराएं and उनमें से we can identify the talent. So the idea is that can we put a structured roadmap of India where it starts with grassroots development and from schools को हम districts का connect करें, फिर state के साथ, फिर national level पे, and then we will have international athletes. ये बेस जितना ब्रॉड होगा, if you broad base as much as possible, तो quantity will lead to quality. You get more children to play 60 minutes every day, so you will produce more champions. So the idea is that can we upgrade the PE teachers and community coaches on doing this fitness assessment at different levels. So it's a big opportunity for school leaders, PE teachers to transform India. So the idea is that can we find the next champions. So the Khelo India Fitness Assessment Program was launched by the Honorable Prime Minister in February 2019. So which has 4 things called सीखें, खेलें, स्वस्थ रहें और ये 3 चीजें. So basically about learning how to play sports. Second is learning about finding play fields, and third is about fitness assessment. So let's look at this little video. यहाँ ढूंढो बाहर ढूंढो, घर में भी या बाहर ढूंढो, खेलते हो कि नहीं हो, अरे इंडिया के नए चैंपियन ढूंढो। फुटबॉल में, कबड्डी में, निक्कर में या चड्डी में, हॉकी में या टीटी में, रेस में या पीटी में, मम्मी भी और पापा भी, टीचर भी और मामा भी, अंकल आंटी बच्चा पार्टी ढूंढेंगे अब चैंपियंस भी। कैसे खेले, कहाँ खेले, चाहे गुरु हो या चले, कितने फिट हो यहाँ देखो, रूल सारे यहाँ सीखो। कितना तेज दौड़े देखो, कितना दूर कूद देखो, खेलते होंगे कहीं वो, अरे चलोगे ले चैंपियन ढूंढो। खेले भी हिले भी। खेलो इंडिया ऐप के साथ आप भी ढूंढ सकते हैं अगले चैंपियंस। तो कोई फोन न रह जाए जिसमें ये ऐप ना हो, ताकि कोई चैंपियंस ना रह जाए जो डिस्कवर ना हो। अरे चलोगे ले चैंपियन ढूंढो। खेलो इंडिया ऐप, चलो चैंपियंस ढूंढे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसका मेन पर्पस हो गया कि हम खेलो इंडिया के फिटनेस असेसमेंट को करें और उसमें थ्रू हम चैंपियंस को ढूंढें।
नेक्स्ट है खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस प्रोग्राम क्या है। तो इसके दो पार्ट्स है। वन इज फिजिकल फिटनेस असेसमेंट ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जिसमें हम सारे बच्चों की फिटनेस के असेसमेंट की बात करते हैं। सेकंड है जो बच्चे जिनका पोटेंशियल टैलेंट है तो उनका स्पोर्ट्स स्किल्स की भी असेसमेंट हो। ये दो मेन पार्ट है। वन इज फिटनेस असेसमेंट फॉर ऑल, सेकंड इज स्पोर्ट्स स्किल्स असेसमेंट जो वो पोटेंशियल टैलेंट है। तो इसमें जो नंबर ऑफ टेस्ट है, तो सर अगेन आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो जो 5 to 8 years है उनके लिए 3 जिसमें BM, कैन हियर मी? No, we can. Okay. 9 to 18 years, there are 6 tests which are there. BMI, speed, endurance, flexibility, core strength और muscular endurance. ये 6 tests हैं for 5 to 18 years. So broadly class 1, 2 and 3 के लिए first set of test, and for class 4 to 12 you have the second set of tests. So there are 4 interfaces which are there, 4 stakeholders. पहला वाला हो गया assessor, who is basically the sports coach or the PE teacher, or who can do assessment. Second hai schools, who can actually upload the student data. They can manage all the assessors. They can look at the fitness report, and they also look at the progress of the school and children. Third hai parents ka interface. Parents can actually look at the individual report card of children, look at the fitness dashboard, insights, and how is the child progressing. And from Sports Authority of India, they can actually track performance of any school, any for assessor app. If you, since all of you are PE teachers, and so basically the first thing is download the assessor. You can find it on Google Play Store or Apple Store. On both you can find. सुजीत सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। एक्चुअली वो पहाड़ के ऊपर हूँ तो वो थोड़ी, अगर सर वीडियो ऑफ करेंगे तो क्या? हेलो, हेलो, यस यस, हेलो, ये सर सुनाई दे रहा है? हाँ जी, सुनाई दे रहा है। हाँ, मैं एक्चुअली ऑडियो अलग सिस्टम है, ठीक है। तो ये असेसर का जो ऐप है ये ऑफलाइन मोड में चलता है, and once the test is done, the teachers can actually see the status of the report, जिसमें 3 पार्ट्स है। प्रिंसिपल का लॉगिन है, असेसर्स का डाउनलोड करना पड़ेगा, और पेरेंट्स के लिए खेलो इंडिया का अलग से ऐप करना है। सो फॉर प्रिंसिपल्स इट इज schoolfitness.kheloindia.gov.in, फॉर assessors it is Khelo India school version, and for parents it is Khelo India. So that's a broad background. So what I'll do is, so second session, I will take this session along with Ankur. So here we are going to talk about registration of school and assessors. So basically school अपने आप को register करना है, and how do you add assessors, that is PE teacher and sports coaches. जिसमें एक है स्कूल का इंटरफेस है थ्रू fitness.kheloindia.gov.in. The school can actually go there to look at how the schools are going to register and obtain the school user name and password. I'll take a look at this video, and so if there are questions, then we will also take those questions. So but basically, so this is the process for that. So here we will learn how to sign up on Khelo India National Fitness Program for schools. First of all, you have to click on this URL
You have to type schoolfitness.kheloindia.gov.in. After that, you will click on this आवाज sign आ up रहा है क्या? button. New Hello? school self-registration page will जी सर, आवाज open. आ रही है. You have to fill certain school details. Wants to join through. You can select school chain or board. I have selected board. From this list of given boards, you have to select your school board. School code, UDICE code. You have to enter your school code or your UDICE code. Select zone. So if your school is from North India, you have to select North. If your school is from South India, you have to select South. And if your school is from West, Northeast, East, Central, you have to select as per the location of your school. Region. My region is Delhi East. State, Delhi East. City is South Delhi. School name. Now make sure that you enter correct and complete name of your school. My school name is New Greenfield School, Saket. Select the shift. Enter your school mail ID. Make sure that you enter correct school mail ID because one OTP will be sent on this mail ID. Enter your OTP here. Click on this verify button. OTP verified successfully. Same way you have to enter your school mobile number. One OTP will be sent on your mobile number. Please verify this number. Close. School address. You have to enter your complete school address. School website address. Please enter your school website. In school description, you have to enter approx strength of your school. After that comes school admin details. Here you have to enter the name of your principal or HM. Select the designation, gender. After that enter the CAPTCHA. Please check the entries which you have done are correct. After that, click on this submit button. One message comes up saying school added successfully. Click on this close button. Now one mail has been sent on the email address which you have entered while registering. Let's check that email. So this is the mail which we have received. Here we have username and password. Using this user ID and password, you have to log in on Khelo India National Fitness Program portal. So this is how you register on Khelo India portal and you receive user ID and password for your principal HM. Thank you. Yeah, so you saw this thing. Uncle, you want to add anything? Ankur? Yeah, sir. Yeah, getting your voice, sir. Yeah, sir, it was very well explained, sir. So if we have any questions on this, we can take after the session, sir. Okay. Yeah. OTP verification. So there are going to be two emails which you will receive as teachers. So one is the first email, it is for the verification of email ID. And the second one is basically verification of your mobile ID. That is what you actually saw in the video. So it needs a verification of both email and mobile number so that सारे email address और mobile number वो ठीक हो. And once it is activated,
then the principal will receive an email which has a complete detail. जिसमें user ID, password, and how do you get started? कि PE teacher को क्या करना है? How do you create a profile? And how to upload the data? All of that is basically there. So everything is there. All the links for the presentation, admin manual, videos, everything is there in the email itself. The second thing is about recovery of account. So this is where in case you forget your account, so what you need to do is to go to this screen where you click on, you put the school code or UDICE number or the username, email address or phone number, whatever you remember. And then you put the captcha and the system will send the OTP and you will be able to recover your account. COVID के time में काफी लोगों ने create किया होगा, काफी स्कूलों ने भूल गए होंगे. So if you remember any of this thing, any of these 5 pieces of information, you will be able to recover your account. Second thing that we are going to look at is PE teacher or coach or assessor, how to register yourself. As a PE teacher or a coach, how do you register? So here, what you need to do is to, from Google Play Store or from Apple Store, you download the E-Khel India Fitness Assessment app. It's called E-Khel India bracket में school version. You can download that. It is a white color icon. Let's see the registration process. It's very simple. This is E-Khel India application. Please click on Start Fitness Assessment. Click on Sign Up button. Please enter your name. Enter your correct email address. It should be your personal email address. Please enter your phone number. Enter your school address. It is optional. Please enter your state. Mine is Delhi East. Enter your district. Enter your city name. Enter your block. Enter your qualification, gender. Have you attended any TOT? Please select this if you are attending any TOT, and if you are not attending, please leave it. Take the remaining 2 boxes and click on Sign Up button. So this is the trainer ID. You have to take screenshot of it, and it will be Right. Yeah. So here, so once you've done that, you will get a confirmation email which has all the details. कि आपको स्कूल प्रिंसिपल के पास जाना है and to link yourself with the school. It's a very simple process. So from a principal's point of view, now पहले हमने school create किया. First we created a school. The PE teachers have also registered themselves. So now there are 2 things pending. One is the principal has to upload the student data, and second thing that he has to do is to link the PE teacher as sports coaches to the school. So let's look at the first process. Yeah. Is it visible? Hello? No, sir. It's not visible. No, not Screen- now. Screen is not visible? No. 1 second. Okay, so it's reconnecting.
So till that time, let me just explain. So we did two things. First thing that we did was we created the principal created the school. So that is step one. Step two is that the PE teachers or the sports coaches, they created their own account. So let us say school has 5 PE teacher or coaches, so they will create their own account. Now the third step is basically on how to upload the student data, and the fourth one that we'll see is basically how do you add the PE teachers to the school. So let me अंकुर तुम्हारे वहां से शेयर हो जाएगा स्क्रीन. Sir, I have to check. ओके अभी वो जूम रीस्टार्ट हो रिकनेक्ट कर रहा है. सॉरी पार्टिसिपेंट्स. हाँ, किसी ने लिखा कि मेरा प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा है, वो इसलिए कि मैं एक्चुअली ऑडियो किसी और डिवाइस से कर रहा हूँ और ये दूसरे डिवाइस से कर रहा हूँ, इसलिए हो रहा है. मैं अभी Ankur, I have already shared the presentation with you. Yes, sir. Yes, sir. I'm just doing it. If you could actually go to the slide and you change it, then we can see it also. Okay. Is it visible now? Yes. Okay. तो हमने अभी देखा कि हाउ डू यू रजिस्टर एज एन असेसर. ये पूरा प्रोसेस दिख गया था सबको. तो पी टीचर जब अपना रजिस्ट्रेशन कर लेगा तो आफ्टर डाउनलोडिंग ऑफ दिस थिंग you will get an email mentioning about the process कि हम next step क्या है. So the process for that and also link to all the presentations. Now the next step is for the principals to upload the student detail. So we will take a look at that. वो कैसे होगा. So let's look at the process for uploading the student data. So now as you have received user ID and password for your principal HM, so first of all what you have to do now is you will go to schoolfitness.kheloindia.gov.in. After that you will click on login button. Enter the user ID and password here which you have received. Enter CAPTCHA. Click on this sign in button. So this is the page of your school for Khelo India, and these are school fitness app statistics. Here you can see till now no student has been uploaded. So to upload students data we have to go on student. We will click on student data upload. Now by default my school name is already there. I have to select profile. I will select it as personal profile. Now you can see 3 orange colored buttons have come up. So first of all click on this download template. One Excel sheet named personal profile will get downloaded. Open this file. So in the first row you can see there are 2 colors. First one is orange and the second one is yellow. The fields in the orange color are mandatory for you and the fields in yellow are not mandatory for you. So you are required to fill up all the fields that are in orange color. In the first column you have to enter school code
In the second column, you will enter student admission number. In the third column, name of the student. After that, gender, class, section, roll number, and date of birth. Save the data. Now click on this choose file button. Select personal profile in which we have uploaded students data. Click on open. After that, click on this upload button. Now we have successfully uploaded the students data. One message has come up. Thank you for uploading the data. Your request has been submitted. So this is how we upload the students data. Click on home button. Now you can see the students which we have uploaded can also be seen on this home page. This is how we upload the students data. Thank you. तो ये सबने देखा कि स्टूडेंट डेटा को कैसे अपलोड करना है. तो जस्ट फॉर योर दिस थिंग मैं So आपको now as you for uploading the data, your request has been submitted. So this is how. तो यहाँ पे समराइज करने के लिए यहाँ पे 3 बटन है. वंस यू गो टू स्टूडेंट करते स्टूडेंट डेटा अपलोड करेंगे. स्कूल का नाम सिलेक्ट करना है, प्रोफाइल सिलेक्ट करना है और फाइल सिलेक्ट करना है. एंड सो यू डाउनलोड द टेम्पलेट and you can see some sample data also. And once you have looked at the sample data, then you can do the upload of data. Student upload data में हमने ये देखा कि उसमें कुछ ऑरेंज की कॉलम से और कुछ येलो की कॉलम से. ऑरेंज की कॉलम में स्कूल का कोड, स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, उसका नाम, उसका जेंडर, कौन से क्लास, कौन से सेक्शन, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ. ये मैंडेटरी फील्ड्स है. आप जब भी भर रहे हैं तो ये इस चीज को ध्यान रखें कि मैंडेटरी फील्ड्स होना चाहिए. स्कूल का कोड यू कैन सी इट ऑन द इंटरफेस इटसेल्फ, क्योंकि जब हम भरते हैं उसमें तो स्कूल का कोड यहाँ दिखता है. यहाँ पे स्कूल का कोड है तो आप ये सेम स्कूल का कोड डालिए. बाकी इंफॉर्मेशन जो है हमने देखा था इस तरीके से कुछ होगा. स्कूल का कोड, स्कूल में स्टूडेंट एडमिशन नंबर है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया स्कूल का. बाकी नाम, जेंडर, क्लास, सेक्शन, ये बहुत स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है. सो वंस यू डन दैट, then your student data is successful. So let us see कि in case स्कूल का स्टूडेंट का डेटा में कुछ प्रॉब्लम है तो वो कैसे रेक्टिफाई करेंगे. हाउ टू रेक्टिफाई एरर व्हाइल अपलोडिंग. और अपलोडिंग के टाइम अगर तो सिस्टम काफी इंटेलिजेंट है, वो आपको बताएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है. अभी हम इसको चेक करते हैं. If some errors come in uploading students data, let's see how to rectify them. First of all, go to schoolfitness.kheloindia.gov.in. Click on this login button. Enter user ID and Pathshala. Click on sign in button. Select student data upload. Select profile. Click on download template. Open this personal profile sheet. So this is the Excel sheet where you have to upload the students data. Here you will enter school code. This is the school code which you have to enter. Here you will enter student admission number, name of the student, enter gender here. You can enter gender in the form of male, female, boy, girl, M, F, B or G. Class you have to enter in Roman form. Enter alphabets in section. Enter roll number here. Date of birth. In date of birth you have to follow the format of dd/mm/yyyy. So this is the dummy data which we have entered. Save this data. Now let's try to upload this data. Click on choose file. Open personal profile sheet. Click on upload button. Some errors have been detected in Excel sheet. Download the error log file and rectify your sheet accordingly. Click on this download button. Open this sheet. So these are error details.
In row number 10, school code is not matching with the selected school. In row number 2, duplicate student UID. In row number 3, duplicate student UID. And again in row number 3, date of birth is not in correct format. So let's correct these. आप इसमें देख सकते हैं इसमें 4 एरर आया जो अपलोड हुआ है. स्कूल का कोड मैच नहीं हो रहा है, स्टूडेंट का आईडी डुप्लीकेट है 2 और 3 में, और फिर डेट ऑफ बर्थ सही फॉर्मेट में नहीं है जो हम थर्ड रो को देखते हैं. Details. Go to the personal profile sheet. Change the school code. Correct student admission number. Correct the date of birth here. Save the changes that you have made. Now try to re-upload the personal profile sheet. Click on choose file. Select personal profile sheet. Open. Click on upload button. One message has come. Thank you for uploading the data. Your request has been submitted. So this is how you upload the student's data. And if error comes, you rectify this way. Thank you. सो हमने देखा कि एरर कुछ आता है तो कैसे रेक्टिफाई हो सकता है. फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं कि प्रिंसिपल ने अभी पहले अपना स्कूल क्रिएट किया, फिर असेसर्स अपने आईडी क्रिएट किया. अभी थर्ड चीज हमने देखा कि स्टूडेंट्स का डेटा को अपलोड कैसे करना है. अब हम क्या करेंगे, क्यूआर कोडेड का स्टूडेंट आईडी कार्ड हम जनरेट करेंगे. वो देखते हैं कैसे जनरेट करते हैं. Now to download students fitness ID cards, first of all you have to log in. Enter principal HM user ID and password. Enter CAPTCHA. Click on sign in button. Now here you have to go on student. Click on student login password. Select the school. Select the class of which you want to download the fitness ID card. Click on view button. So these are the students in class first A. Click on this checkbox. Click on this print fitness ID cards. These are the ID cards. Click on this print button to print fitness ID cards. Thank you. तो अभी ये देखा हमने कि बहुत सिंपल है स्टूडेंट का आईडी कार्ड क्रिएट करने के लिए. तो जस्ट चूज अ क्लास जिसका आईडी कार्ड प्रिंट करना है, तो पूरे क्लास का आईडी कार्ड प्रिंट हो जाता है. फिर आप उसको ये चाहे तो आप अपना जो स्कूल का आईडी कार्ड है उसके पीछे भी लगा सकते हैं, या तो इसको इंडिपेंडेंटली रखना है तो रख सकते हैं इसको. द बेस्ट थिंग इज कि ये जो आईडी कार्ड है आप इसको 12 साल तक यूज कर सकते हैं. मतलब कि फ्रॉम क्लास 1 से लेकर 12 तक, जब तक बच्चा स्कूल में है तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमने सारी चीज कर लिया. अभी हम बच्चों का डेटा तक भी अपलोड हो गया, उसका आईडी कार्ड बन गया. अब हमारा पी टीचर तो ऑलरेडी है, लेकिन वो उनका पर्सनल प्रोफाइल बना है, वो स्कूल्स के साथ लिंक नहीं है. सो लेट अस सी हाउ डू वी लिंक पी टीचर्स एंड स्पोर्ट्स कोचेस टू द स्कूल. So now to manage assessors on principal HM page, you have to click on manage assessor. Here you have to enter trainer ID. Click on search button. Now this is the trainer ID. This is the name of the trainer, mail ID of the trainer, and contact number of the trainer. After that you have to click on activate button. Are you sure you want to activate the selected assessor with your school? Click on yes button. Now click on registered with school. So now you can see the trainer is activated with this school, and he has also received user ID and password for Khelo India Fitness Assessment mobile application on the mail ID which was entered while doing sign up on Khelo India mobile application. This is the mail which was received.
This is the user ID and password. Using this user ID and password, he can log in the mobile application and can start fitness assessment. Thank you. तो ये आपने देखा कि बेसिकली सिंपल है। अगर मुझे मैनेजर सिस्टम में जाऊंगा तो दो बटन है, रजिस्टर्ड विद द स्कूल, अगर 5 पी टीचर्स है, अगर कोई नया पी टीचर है किसी स्कूल से आ रहा है तो आप उसके आईडी को सर्च कर सकते हैं, बिकॉज ही विल कम विद हिज आईडी और हिज नेम और ईमेल एड्रेस। यू विल गेट टू सी द लिस्ट जो आपके स्कूल के, आप उसको एक्टिवेट करेंगे तो आपके स्कूल का पूरा डेटा वो देख सकता है। जब कोई छोड़ के चले जाएगा तो आप सिमिलरली आप यहाँ पे जाके रजिस्टर्ड स्कूल में जाइए और उसको डीएक्टिवेट कर लीजिए तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। बिकॉज ये काफी नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि पी टीचर छोड़ के चले गए तो फिर क्या करें। नेक्स्ट हम ये करें को, जैसे किसी ने मान लीजिए कि लास्ट ईयर टेस्ट किया था, इस साल बच्चों का डेटा फिर से अपलोड करने की तो जरूरत नहीं है। So what you, or let us say you're doing fitness assessment in 2022. So next year when you do assessment, then the student should be in the next class. So this utility is basically about promoting and transferring students. Let's see how to promote. To promote students, click on student, student login password, select school, select class, click here to promote. These are current classes, these are after promotion classes. Click on this promote button. Click on I agree. Now to delete students record, click on select school, select class, click on view button, select the student, click on edit. To transfer or to delete student, click on transfer. Click on yes button. Thank you. तो ये तो अब वो सारे चीज हो गई, मतलब स्टूडेंट का डेटा अभी अपलोड हो गया, उनको प्रमोट हो गया। अभी हम देखते हैं कि स्टूडेंट अभी टीचर्स अभी ऑटोमेटिकली वंस यू मैप द असेसर्स विद द स्कूल, तो क्या होगा कि जो ऐप में ऑटोमेटिकली वो डेटा जो है उसमें मूव हो जाता है उनके मोबाइल फोन में, पी टीचर के मोबाइल फोन में। तो ये रिकैप है इसकी। हमने ये देखा कि 5 to 8 ईयर्स के लिए 3 टेस्ट है, बीएमआई स्टैटिक बैलेंस कोऑर्डिनेशन, और 9 to 18 के लिए 6 टेस्ट है, बीएमआई स्पीड, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोर स्ट्रेंथ, और ये कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोर स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस। अभी हम देखते हैं खेलो इंडिया बैटरी ऑफ टेस्ट क्या है क्लास 1, 2 और 3 के लिए, और क्लास 4 to 12 के लिए, उसको देखते हैं अभी। द फर्स्ट वन जो 5 to 8 ईयर्स के लिए है बीएमआई। तो बीएमआई जो है बॉडी मास इंडेक्स उसको कहते हैं, तो बॉडी कंपोजिशन को चेक करने के लिए तो बीएमआई के थ्रू भी कर सकते हैं, फैट परसेंटेज भी लोग चेक करते हैं, बट जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है खेलो इंडिया का वो है बीएमआई। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। बीएमआई का जो फैक्टर है इज डिपेंड्स ऑन द एज, जेंडर और हाइट और वेट, ये 4 चीजें उसकी इनपुट्स होती हैं। तो इसलिए क्योंकि हमारे सिस्टम को ऑलरेडी पता है बच्चों का जो डेटा अपलोड होता है कि उनका डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है कि वो उनका एज क्या है, और उनका मेल और फीमेल वो जेंडर ऑलरेडी 2 इनपुट्स है, और 2 इनपुट्स हमें चाहिए वो है हाइट एंड वेट। इसको मेजर करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन एक्चुअली हैव अ डिजिटल स्केल एंड अ स्टेडियोमीटर। तो स्टेडियोमीटर जो है उसमें इंटीग्रेटेड होता है, हाइट और वेट दोनों इंटीग्रेटेड होता है। अभी हम चेक करते हैं कि कैसे होगा।
एंड टेस्ट कराने से पहले इम्पोर्टेंट है पार्टिसिपेंट जो है अपना शूज एंड हेवी क्लोथिंग दे शुड रिमूव। अगर कुछ हेयर बैंड है कुछ लगा हुआ है तो लड़कियों को आप उनको बोलिए कि उसको वो हटा दें हेयर बैंड को और जूता ना पहने। और वो कैसे खड़े होना है और क्या है हम उसको चेक करते हैं, बट ब्रॉडली जो है पार्टिसिपेंट्स को सीधा देखना है और पूरा स्ट्रेट देखना है और उसको खड़े होना है विद हैंड्स लेग्स और आर्म साइड पे और लेग स्ट्रेट और शोल्डर्स जो है लेवल पे होना चाहिए। एंड ये स्टेडियोमीटर को जो आप रखेंगे वो यू शुड कीप इट इन अ फ्लैट सरफेस एंड नॉट कि कारपेट के ऊपर उसके ऊपर नहीं रखना है, आप उसको फ्लैट सरफेस के ऊपर रखना है। अब हम इसको चेक करते हैं। To calculate the body mass index, first open the Khelo India Fitness Assessor app. Once the app is on, select the Take Test option. From various test options, select BMI. The app is now ready to calculate the body mass index. Body mass index or BMI is used to measure the body composition, which refers primarily to the distribution of muscles and fat in the body. Body size such as height, length and girths are also grouped under this component. BMI is calculated by taking a person's weight and dividing by their height squared. To measure the height correctly, a stereometer is required. If a stereometer is not there, it could be done against a wall as well with measuring tape pasted on it. It should be done on a hard flat surface. The participant should remove shoes, bulky clothing, hair ornaments and unbraid hair that could interfere with the measurement. Participants should stand with feet flat, together and back against the wall. Legs should be straight, arms at side and shoulders level. तो आपने देखा होगा कि जो खड़े होने का जो तरीका है वो स्ट्रेट है, आई स्ट्रेट है, लेग ये और आर्म्स साइड में। Arms at side and shoulders level. The participant should look straight ahead and the line of sight should be parallel to the floor. The height should be recorded in centimeter. The reading of the height should be typed in at the designated place on the screen. To measure the weight accurately, a digital scale should be used. The scale should be placed on firm flooring rather than a carpeted floor. तो ये जो है डिजिटल स्केल है और ये कार्पेटेड ये प्रॉपर हार्ड सरफेस में है, जैसे इसमें एथलेटिक ग्राउंड के ऊपर है। Floor. The participant should remove shoes and heavy clothing. The participant should stand with both feet in the center of the scale. The weight should be recorded in kilogram and gram to the nearest decimal. The reading of the weight should be typed in at the designated place on the screen. Once both the readings are entered in the app, scan the ID card of the participant by tapping on the scan option. Once the age and gender of the participant is updated, save the record by tapping on the save option. This completes the process to calculate the body mass index or BMI. हेलो हेलो हेलो, यस। आपका अनम्यूट मेरा म्यूट हो गया था क्या? हाँ, आवाज नहीं आ रही सर अभी। अभी आ रही है? नहीं, हाँ अभी आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो पता नहीं म्यूट किसने किया था, मैंने तो म्यूट नहीं किया था। अपने आप कैसे हुआ, आई डोंट नो। इससे पहले वाला आया था ये वाला इसमें मेरा आवाज आया था, नहीं आया था? हाँ, वीडियो प्ले हो रहा था, आवाज आ गया था इसमें। नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही थी उसके बाद, उसके पहले। सर जो अभी बाद वाला स्टार्ट किया था उसमें आवाज नहीं आ रही थी आपको। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, ओके, ठीक है। तो ये
कोऑर्डिनेशन का टेस्ट है जिसमें प्लेट टैपिंग टेस्ट करते हैं। सीधा इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन सर ये चेक कुछ होता है। पार्टिसिपेंट्स ने चैट बॉक्स में लिखा है बीएमआई तक आवाज आई। बीएमआई 1। बीएमआई का ये आई थी आवाज पूरी मेरी हाँ, कि इसमें नहीं आवाज थी? आई थी। ठीक है, ओके, ठीक है, Next सो दैट्स गुड। ओके, ठीक है, सो दैट्स फाइन। सो बेसिकली इसमें स्टेडियोमीटर जो है, जस्ट टू समराइज, स्टेडियोमीटर जो है इंटीग्रेटेड होता है हाइट एंड वेट दोनों के साथ, दोनों एक ही डिवाइस में है। ये रफली अराउंड 2-2,500 रुपए में आपको मिल जाएगा, रफली अराउंड 2,500 रुपीज। एंड आप उसमें कराना है और यू हैव टू मेक श्योर कि वो शूज एंड हेवी क्लोथिंग ना पहने। अगर हेयर बैंड वगैरह है वो लड़के ने पहने हुए, आप उनको बोलना है कि उनको हटाना है। The participants have to look straight. They should be standing on a digital scale. They have to look straight and parallel to the floor. Arms side में होना चाहिए, legs straight होने चाहिए, shoulders level पे होने चाहिए। उसमें क्या होगा कि you will be able to measure both the weight and the heights together. And when you're measuring the height, it will be let's say 157.2 centimeters. So it will be up to a decimal point. Similarly, the weight will also be up to a decimal point. Second है coordination test. Coordination is basically plate tapping test. इसमें hand eye coordination को check होता है. And here we are looking at 25 cycles को tap करने के कितना टाइम लगता है. So मैं इसका dimensions के बारे में बाद में बताऊँ, पहले वीडियो देख लेते हैं. To conduct the plate tapping test, first open the Khelo India Fitness Assessor app. Once the app is on, select the Take Test option. From various test options, select Coordination and then tap on the plate tapping option. The app is now ready for the plate tapping test. The plate tapping test measures upper body reaction time and hand-eye quickness and coordination. It also assesses the speed and the coordination of limb movement. One table, 2 yellow discs of 20 cm diameter and one rectangular sheet of 30 by 20 cm size are needed to perform this test. The table height should be adjusted so that the subject is standing comfortably in front of the discs. The 2 yellow discs are placed with their centers 60 cm apart on the table. ये इम्पोर्टेंट है। ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये बहुत सिंपल है, कोई भी टेबल हो जो कंफर्टेबल हाइट का हो, और इसमें आप A4 साइज को कोई भी पेपर ले लीजिए, और ये जो 2 येलो डिस्क है ये भी आप पेपर से भी कर सकते हैं, 20 सेंटीमीटर डायमीटर, सो 10 सेंटीमीटर का रेडियस, और इनको उनका डिस्टेंस कितना चाहिए, टोटल बिटवीन दिस एंड दिस इज 60 सेंटीमीटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ टू दिस थिंग इज 30 सेंटीमीटर, सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. So we will look at, so this is about the setup. Now let us look at the test. Table. The rectangle is placed equidistant from both the discs. The participant is encouraged to stand in a balanced posture. The non-preferred hand is placed on the rectangle. The subject moves the preferred hand back and forth between the discs over the hand in the middle as quickly as possible. तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है मूवमेंट है वो एक जो आपका प्रिफर्ड हैंड है, सो यू हैव टू डू द टैपिंग विद द प्रिफर्ड हैंड. सो जो भी आपका हैंड है व्हिच यू डोंट, व्हिच इज नॉट योर प्रिफर्ड हैंड, लेस यूज करते हैं, यू कीप दैट ऑन द पेपर and use the preferred hand to do the tapping. So here we are going to look at the time taken to complete 25 cycle. 25 cycle ये हुआ कि let us say I start with the left, I tap on the left one, go to the right and come back to the left. That is one cycle. So it is either 50 taps or 25 cycles. So वो important आपको है कि it is 25 cycle from here to here and then back. So this is one cycle. But if it is number of taps, this is 1, this is 2, this is 3, 4, 5, 6. So this is, if you count like that, then it is 50 tap. So it's easier to count the cycles. From here to here is one cycle. From again like that. Once the participant starts this test, the start timer option should be tapped on the screen.
This action is repeated for 25 full cycles. The total time taken to complete 25 full cycles is recorded. As the participant completes 25 full cycles of tapping, stop timer option should be tapped on the screen. The clock on the screen shows the time taken by the participant to complete 25 full cycles of plate tapping. To record the data, first scan the ID card of the student and then tap on the save option. This completes the plate tapping test. So the next one is flamingo balance test. इसमें हम स्टैटिक बैलेंस को चेक करते हैं. So इसमें एक्चुअली दो तरह का टेस्ट होता है. एक होता है स्टॉक टेस्ट. स्टॉक टेस्ट इज बेसिकली हाउ लॉन्ग कैन यू स्टैंड ऑन वन लेग. कितना देर तक आप एक लेग में खड़े हो सकते हो, वो स्टॉक टेस्ट कहते हैं. बट स्टॉक टेस्ट का प्रॉब्लम क्या है कि वो आप कुछ बच्चे बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो घंटों घंटों तो खड़े हो सकते हैं. सो वी कांट एक्चुअली यूज दैट एज अ टेस्टिंग. सो उससे सिमिलर रिलायबिलिटी का टेस्ट है, इट्स कॉल्ड फ्लैमिंगो बैलेंस. इसमें हम कहते हैं कि अगर आप एक मिनट अगर खड़ा होना है, 60 seconds if you have to stand, then in how many times are you falling? If you don't fall at all, if your fall is 0, then that is the best score. But if you fall, let's say 2 times or 3 times, so that's still understandable. But if the number of falls is more than 15 in first 30 seconds, पहला 30 सेकंड में अगर 15 बार कोई गिरता है, then you are disqualified. मतलब कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं अगर आप पहला 30 सेकंड भी नहीं खड़े हो सकते हैं, 15 बार गिर जा रहे हैं, इसका मतलब आप में कोई बैलेंस नहीं. सो दैट इज अ वेरी सिंपल टेस्ट. सो लेट्स सी हाउ द टेस्ट इज टू बी कंडक्टेड. टेस्ट को कैसे कंडक्ट करना है अभी हम इसको देखते हैं. To conduct the Flamingo balance test, first open the Khelo India Fitness Assessor app. Once the app is on, select the Take Test option. From various test options, select Balance and then tap on the Flamingo balance test option. The app is now ready for the Flamingo balance test. The Flamingo balance test measures the ability to balance successfully on a single leg. Test assesses the strength of the leg, pelvic and trunk muscles as well as static balance. While balancing on the preferred leg, the free leg is fixed at the knee and the foot of this leg held close to the buttocks, standing just like a flamingo. The test should be done on a non-slippery even surface by standing on a beam or a brick. So you can see कि किस तरीके से बच्चे को खड़ा होना है. एक ब्रिक के ऊपर. ब्रिक भी एक हार्ड सरफेस के ऊपर होना जरूरी है, एंड दिस इज द पोज फॉर डूइंग दैट. बिफोर स्टार्टिंग जो भी टीचर है वो बच्चे को असिस्ट कर सकता है हाथ को पकड़ने के लिए, फिर उसके बाद वो छोड़ देगा. अभी हम देखते हैं उसको कैसे करना है. The athlete keeps balance by holding the instructor's hand if required. The timer is started as the instructor lets go. To start the timer on the app, Start Timer should be tapped. The timer is stopped each time the athlete loses balance, either by falling off the beam or letting go the foot behind being held. To do that, pause timer should be tapped on the app each time the participant loses balance. Start the timer again when the participant is in the position. If there are more than 15 falls in first 30 seconds, the test is terminated. Sorry. To start the timer on the app, if there are more than 15 falls in first 30 seconds, the test is terminated. The number of falls or loss of balance in 60 seconds of balancing is counted and recorded. The timer automatically stops. तो आपको जो है ये हर बार जब वो कोई फॉल होता है तो आपको टाइमर में पॉज करना है. टाइमर फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको पॉज करना है. जब 60 सेकंड हो जाएगा तो अपने आप ही वो बंद हो जाएगा. Stops at the 60 seconds mark.
The ID card of the participant is scanned by tapping on the scan option. Once the participant details are updated, the data is saved by tapping on the save option. This completes the Flamingo balance test. तभी हमने फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट को देखा। फिर हम देखते हैं कि 9 to 18 ईयर्स के लिए क्या टेस्ट है। BMI हमने देख लिया, ऑलरेडी सेम है। फिर उसके आगे का देखते हैं। इट इज कॉल्ड सिट एंड रीच टेस्ट। सो लेट्स सी हाउ द सिट एंड रीच टेस्ट इज डन। ये थोड़ा आप इसका डायमेंशन को देख लीजिए, बिकॉज डायमेंशन से इसका इंपॉर्टेंट है कि उसका टॉप का डायमेंशन कितना होना चाहिए। टॉप का जो डायमेंशन है वो 12 feet by 21 का होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो साइडों में 12 by 12 का हो सकता है, 12 by 10 का भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। तो इसको हम चेक करते हैं। ये 21 इंच मतलब है कि वो, अभी हम इसको चेक करते हैं वो कैसे करते हैं। इसका मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है। To conduct the sit and reach test, first open the Khelo India Fitness Assessor app. Once the app is on, select the Take Test option. From various test options, select Flexibility and then tap on the Sit and Reach option. The app is now ready for the sit and reach test. The sit and reach test is a common measure of flexibility. It specifically measures the flexibility of the lower back and hamstring muscles. A sit and reach box is required to perform this test. The sit and reach box should be 12 by 12 inches on sides, 12 by 10 inches on front and back, and 12 by 21 inches on top. The top panel should be inscribed with centimeter top. ये उसका डायमेंशन है। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो पूरा लेंथ है 21 इंच का है, ऊपर का 10 है और ये हाइट जो है 12 इंच का है। सो ये और ये 12 by 12 का है। सो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है 9 इंच का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप इसको 9 इंच भी सोच सकते हैं, इसको 23 सेंटीमीटर भी सोच सकते हैं। दोनों में से कोई भी किसी को कुछ भी आप उसको सोच सकते हैं। Inches on front and back and 12 by 21 inches on top. The top panel should be inscribed with centimeter and millimeter gradations. The test should be performed on clean cushioned surface or gym mat. Shoes should be removed before performing this test. This test involves sitting on the floor with legs stretched out straight ahead. The soles of the feet are placed flat against the sit and reach box. Both knees should be locked and placed flat to the floor. With the palms facing downwards and the hands on top of each other, the subject reaches forward along the measuring line as far as possible. Firstly, the initial reach in the normal position is recorded. To do that, the score is calculated to nearest centimeter and put it in the designated place in the screen. After some practice reaches, the subject reaches forward as far as possible and holds that position for at least 2 seconds while the distance is recorded. To record the final position, the score is calculated to nearest centimeter and put it in the designated place. आप इसमें देख सकते हैं दो चीजें, एक तो इनिशियल पोजीशन क्या था और फाइनल पोजीशन क्या है। तो कितना स्ट्रेच कर सकता है, तो उसके डिफरेंस को चेक करते हैं उसमें सिट एंड रीच में, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। The difference between the initial position and the final position of the distance reached by the hand is displayed as net score in the screen. The ID card of the participant is scanned next and then the data is saved by tapping on the save option. This completes the sit and reach test. Next we'll do is 50-meter dash। वो स्पीड को मेजर करने के लिए इट्स गोइंग टू बी स्टैंडिंग स्टार्ट। स्टैंडिंग का स्टार्ट होगा, इसमें फ्लाइंग स्टार्ट नहीं है, तो स्टैंडिंग स्टार्ट है और 50-meter डैश है। इसको हम चेक करते हैं कि कैसे करेंगे। और इसमें जो है आप टिपिकली जो मार्किंग है ट्रैक का 1.22 मीटर का होना चाहिए, मिनिमम तो 1 मीटर का होना ही चाहिए लेन का। और 50-meter डैश के लिए हम इसको चेक करते हैं।
conduct the 50-meter dash test, first open the E-Khel India Fitness Assessor app. Once the app is on, select the Take Test option. From various test options, select the speed and then tap on the 50-meter dash option. Depending on the number of participants, choose same number of lanes on the screen. The app is now ready for the 50-meter dash test. The aim of 50-meter dash is to determine the acceleration and the speed of the participant. The test involves running a single sprint over 50 meters. Start from a stationary standing position with one foot in front of the other. The front foot must be behind the starting line. Participants are encouraged to not slow down before crossing the finish line. Once the participants are ready and motionless, the instructor gives the cue to start. There is no need to manually start the timer. The app is designed in such a way that the timer starts automatically at the sound of the Fox 40 whistle. तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो ऐप है ये फॉक्स 40 विसिल से इंटीग्रेटेड है, तो आप जब भी विसिल बजाएंगे तो ऐप का टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा. अगर 7 बच्चे लाइन में तो 7 चूज कर लीजिए लेन, तो क्योंकि आपको स्प्लिट टाइमर से उनका देख सकते हैं. Participants should be encouraged to practice running with emphasis placed on the concept of pace. Time taken to complete the 50-meter dash for each of the participant is recorded. To record the timing for each of the participants, tap split timer every time a participant crosses the finish line. The screen shows the timing of participants in the order they finished the race. To record individual timings, tap the scan option and then scan the ID card of the participant. Make sure the ID card is scanned in the same order in which they finished the race. Once you have scanned the ID card, जिस ऑर्डर में बच्चे फिनिश करते हैं वो लाइन में होंगे, तो उसी ऑर्डर में उनको स्कैन करना है आईडी कार्ड को, सो दैट उनके आईडी कार्ड of all the participants, save the data to complete the 50-meter dash test. फिर हम देखते हैं 600 रन एंड वॉक वो कैसे करना है. इट इज सिमिलर टू 50 मीटर्स, सो वी विल डू इट क्विकली. सो इसमें एक जो चैलेंज आता है कि स्कूल्स के पास नॉर्मली 400 मीटर का ट्रैक नहीं होता है. अगर नहीं होता तो आप 200 मीटर ट्रैक में भी कर सकते हैं. अगर नहीं होगा तो आप रोड में भी करा सकते हैं ये करके. तो आपको 600 मीटर का हम देखते हैं. To conduct the 600-meter run test, first open the E-Khel India Fitness Assessor app. Once the app is on, select the Take Test option. From various test options, select Cardiovascular Endurance and then tap on the 600-meter run option. Depending on the number of participants, choose same number of lanes on the screen. The app is now ready for the 600-meter run test. The aim of 600-meter run is to measure the cardiovascular fitness and endurance. The test involves running a single sprint over 600 meters. Participants should start from a stationary standing position with one foot in front of the other. The front foot must be behind the starting line. Participants are instructed to run 600 meters in the fastest possible pace. Once the participants are ready and motionless, आप इसमें रनिंग या वॉकिंग डिपेंडिंग ऑन दिस थिंग, डिपेंडिंग ऑन कि बच्चे जो भी जैसे भी कंफर्टेबल रनिंग करेंगे, बीच में अगर थोड़ा स्लो डाउन कर रहे हैं फिर पेस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ तो वो पूरी रनिंग कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसका नाम रन और वॉक लिखा हुआ है. सो इट्स ideally everyone should be running, but sometimes some students probably won't be able to do it, so they can do a combination of running and walking depending on. So the idea is that how in the shortest time they should be able to complete 600 meters. the instructor gives the cue to start. There is no need to manually start the timer. The app is designed in such a way that the timer starts automatically at the sound of the Fox 40 whistle.
Participants should be encouraged to practice running with emphasis placed on the concept of pace. Results are usually better if the participant can maintain constant pace during most of the run and use a strong closing effort. Time taken to complete the 600-meter run for each of the participants is recorded. To record the timing for each of the participants, tap split timer every time a participant crosses the finish line. The screen shows the timing of participants in the order they finished the race. To record individual timing, tap the scan option and then scan the ID card of the participant. Make sure the ID card is scanned in the same order in which they finished the race. Once you have scanned the ID card of all the participants, save the data to complete the 600-meter run test. तो ये बहुत सिंपल है, 50 मीटर रेस की तरह 600 मीटर है, एक्सेप्ट ग्राउंड का कांस्टेंट है, अदरवाइज इट्स इजी टू कंडक्ट. देन वी आर लुकिंग एट पुशअप्स. इसमें दो तरह का पुशअप्स है. मस्कुलर एंड्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं. तो पुशअप इज फॉर बॉयज एंड मॉडिफाइड पुशअप इज फॉर गर्ल्स, जिसमें स्लाइटली चेंज है इन टर्म्स ऑफ द टेक्निक. सो लेट्स लुक एट हाउ इट इज टू बी डन. इट्स इजी टू अंडरस्टैंड क्योंकि ये सबको पता है. मॉडिफाइड पुशअप इज समथिंग दैट यू प्रॉब्ली नीड टू नो, अदरवाइज पुशअप Conduct the push-up test, first open the E-Khel India Fitness Assessor app. Once the app is on, select the Take Test option. From various test options, select Strength and then tap on the Push-up option. The app is now ready for the push-up test. The push-up fitness test measures upper body strength, endurance and trunk stability. A flat, clean cushioned surface or a gym mat is required to perform this test. A standard push-up begins with the hands and toes touching the floor. The body and legs should be in a straight line, feet slightly apart, the arms at shoulder width apart, extended and at a right angle to the body. Keeping the back and knees straight, the subject lowers the body to a predetermined point to touch some other object or until there is a 90-degree angle at the elbows. Then returns back to the starting position with the arms extended. When the participant is ready, the start timer option is tapped on the screen and the participant starts the push-ups. The action is repeated and the test continues until exhaustion or until they can do no more in rhythm. तो ये आप देख रहे हो जो उसका करेक्ट टेक्निक है, किस तरीके से पुशअप्स को करना है. तो होल बॉडी स्ट्रेट, आर्म्स कैसे परपेंडिकुलर है. And you can see it's basically आप कितने push-ups कर पाते हो, how many push-ups can you do before exhaustion. So that is what it is. So that's why it is muscular endurance. Sorry. And the test continues until exhaustion or until they can do no more in rhythm. The number of correctly completed push-up is recorded. For girls, the push-up technique is slightly modified with both the knees resting on the ground. Apart from this, everything else. तो ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ हाउ द होल थिंग इज. लेग्स को कैसे रखते हैं, ऐसे लेग्स को ऐसे करके करना है और नीज के ऊपर करके आपको टेस्ट करना है. तो बाकी सारी चीजें आज इट इज ground. Apart from this, everything else remains the same for girls as well. Once the participant is exhausted, tap the stop timer option and type in the number of correctly completed push-ups in the designated place on the screen. Scan the ID card of the participant and then save the record by tapping on the save option. This completes the push-up test. तो पुशअप टेस्ट है. अब हम लास्ट वाला देखते हैं, पार्शियल कलर. वो कोर स्ट्रेंथ को मेजर करता है, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ. ये है कि हम 30 सेकंड के अंदर कितने कर्ल्स कर पा रहे हैं. दैट इज व्हाट इज पार्शियल कलर.
conduct the partial curl-up test, first open the Khelo India Fitness Assessor app. Once the app is on, select the Take Test option. From various test options, select Strength and then tap on the Partial Curl-Up option. The app is now ready for the partial curl-up test. The partial curl-up test measures abdominal muscular strength and endurance of the abdominals and hip flexors, which is important in back support and core stability. A flat, clean cushioned surface, 2 parallel strips 6 inches apart is required to conduct this test. The subject lies on a cushioned flat clean surface with knees flexed, usually at 90 degrees, with hands straight on the sides with palms facing. तो ये आप देख सकते हैं ये पोजीशन है किसी भी एथलीट का बॉडी स्लाइटली रेज्ड है और हाथ यहाँ पे और ये दोनों स्ट्रिप्स के बीच में जो हो 6 इंचेस का गैप है तो बॉडी को ऊपर ले जाने और यहाँ लाने आपको पूरा नीचे तक नहीं लाना दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पार्शियल कर्ल एंड ये है ये दिस इज हाउ द होल टेक्निक इज हाथ को स्लाइड करके आगे लेके जाना है पीछे करना है 30 सेकंड में हमने पार्शियल कर्ल करेंगे downwards. It should be closer to the ground and parallel to the body. The subject raises the trunk in a smooth motion, keeping the arms in position, curling up the desired amount at least 6 inches above ground. The trunk is lowered back to the floor so that the shoulder blades or upper back touches the floor. Once the participant is ready and is in position to take the test, the start timer option should be tapped. Participant is encouraged to keep normal breathing rate. Results are better if the participant can maintain constant pace during the activity. Maximum number of sit-ups in 30 seconds is recorded. The timer automatically stops at 30 seconds mark. The number of sit-ups is recorded at the designated place. The ID card of the participant is scanned and the data is saved by tapping on the save option. This completes the partial curl-up test. तो recap again 3 टेस्ट है 5 to 8 years के लिए 6 टेस्ट है 9 to 18 के लिए BMI कॉमन है दोनों के बीच में so BMI is a common one so this is the number of tests for class 1 to 3 and 4 to 12 अब हमने देखा कि हम फिटनेस असेसमेंट के what is important कि जो फिटनेस असेसमेंट has to be done the right way बहुत जरूरी है कि जो असेसमेंट है वो ठीक तरीके से हो क्योंकि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए डेटा क्लीन होना बहुत जरूरी है so तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम असेसमेंट को ठीक तरीके से करें and yeah so these are the techniques you can see that all the tests are there तो इसका पर्पस क्या है व्हाई शुड यू डू इट द राइट वे इसको करने का जरूरत क्या है सबसे पहले कि बच्चों का रिपोर्ट कार्ड में सही डेटा होना बहुत जरूरी है करेक्ट डेटा होना जरूरी है सो दैट हर पेरेंट के पास हक है कि वो बच्चों का डेटा सही देखे सेकेंडली टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए करेक्ट डेटा विल इंश्योर कि जो राइट बच्चा है वो सिलेक्ट हो और रॉन्ग बच्चा सिलेक्ट ना हो जाए उसमें डबल वर्क जो है रॉ करेक्ट अगर रॉ टैलेंट है तो उसमें हम डबल वर्क बाय स्कूल और सही बच जाएगा रॉन्ग डेटा का मतलब है कि जो डिजर्विंग एथलीट है उसको हम ले नहीं रहे जो नॉन डिजर्विंग है उसको आगे ले जा रहे हैं आगे जाके एनीवे वो आगे बढ़ नहीं सकता बिकॉज हम एक स्टेज तक आगे ले जा सकते उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते using the app to record so the app data should be entered directly into the application there's no need of any paper and pen and the correct data will only lead to national benchmark unusual cases kya hai so some things that you can think let's say today you have done the test and after 6 months you want to do it again the height cannot reduce drastically the height cannot reduce anyway और सिमिलरली वो सडन इंक्रीज भी नहीं हो सकता ना हाइट रिड्यूस हो सकता है ना वो सडनली बढ़ सकता है 6 महीने के अंदर और टेस्ट का जो डेटा है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर आपको पता होगा वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी मच हायर तो हो नहीं सकता जस्ट इवन इफ द चाइल्ड इज वेरी टैलेंटेड एंड टेस्ट का डेटा बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगा 6 months में so these are some sample data we will look at the sample data later but broadly basically there are 7 levels of fitness that looking at level 1 to level 7 so level 7 is the best 90 percentile and above that's sports fit
Level 6, then the level 6 is athletic, then it is very good, can do better, must improve and work harder. These are the, yeah. So avoid wrong data input, because sometimes हम बहुत छोटे बच्चों को सोच रहे हैं कि वो 44 पुशअप्स कर लेगा, 2 मिनट में 600 मीटर करेगा. तो कुछ डेटा है, हमें we should be very clear about कि उस रिटर्न रीच हम एक्सपेक्ट करें कि 11 साल का बच्चा 31 आ रहा है उसका स्कोर. ये कुछ डेटा है जो थोड़ा सा हमें अनयूजुअल लगा था. 30 सेकेंड्स में 42 पार्शियल कलअप्स कर लिए. सो सम थिंग्स आर लिटिल अनयूजुअल कि 6 सेकेंड में 6 सेकेंड से भी कम में 50 मीटर डैश अगर कर लेता है. सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी लुक एट ऑल द डेटा. सिमिलरली जो एज है बच्चे का, वो हमारा डेटा फिटनेस असेसमेंट भी 5 साल से हो रहा है. वो 4 साल के बच्चा अगर है तो फिटनेस असेसमेंट उसके लिए नहीं है अभी. टेस्ट की वैलिडिटी के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट है. एक तो टूल्स सही होना चाहिए, टेस्ट का प्रोटोकॉल सही होना चाहिए, और टेस्टर जो है उसके एक्सपर्टीज सही होना चाहिए. ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है. टीटीटी टूल हैज टू बी एक्यूरेट. जो आपका वेइंग बैलेंस है, ये सिट एंड रिच का बॉक्स है, सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द टूल दैट वी आर यूजिंग. सेकंड है टेस्टिंग प्रोटोकॉल. जो उसका प्रोसेस है हम सही से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. थर्ड है कि जो टेस्टर है वो बार बार जब करता है तो उसको पता चलता है कि एरर क्या है, वो कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं. तो ब्रॉडली ये सारे पॉइंट्स हैं. अगर कुछ क्वेश्चंस है तो सारे डेटा आपको खेलो इंडिया schoolfitness.kheloindia.gov.in में. और हम जो नेक्स्ट सेशन करेंगे 3 बजे वो है हाउ टू रीड अ रिपोर्ट कार्ड एंड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन. सो विद दैट आई एम स्टॉपिंग out here. So I will take some questions which are there. Yeah, thank you so much, sir. So question you will be taking or shall I take for you? हाँ, ये सो आप क्वेश्चन मुझे पूछ लीजिए, मैं कुछ देख लूंगा. मैं अभी तक तो देख नहीं पाया हूँ, मैं भी कुछ चेक करूंगा. So participants, if you have any question to ask, you can write in the question answer section, or like we can have more discussion about that. Right. मैं देख लेता हूँ कुछ Q&A है. So do we need to register the school and teachers again if we have done the process in past year? No, you don't need to register the school at all. आप अपने स्कूल अगर आप रजिस्ट्रेशन का डेटा भूल गए, जैसे मैंने बोला था कि if you have forgotten the school, आप उसमें जाके आप अपने अकाउंट पर रिट्रीव कर सकते हैं by putting either the school ID, UDIS number, email या तो मोबाइल नंबर. आप कोई भी चीज डालेंगे उसमें तो स्कूल का आपका, और कैप्चा डालेंगे तो आपका अकाउंट रिट्रीव हो जाएगा. और डू यू नीड टू रजिस्टर द टीचर्स अगेन? नो, यू डोंट नीड टू डू बिकॉज दे विल ऑलरेडी बी देयर. आपको अगर भूल गए तो आप बस उसी को यूज कीजिए. आपको बस एक चीज करना है कि बच्चों का डेटा को प्रमोट करना बच्चों को. और जो बच्चे छोड़ के चलेंगे आप उनको ट्रांसफर कर लीजिए, उनको डिलीट मत कीजिए बिकॉज सिस्टम से डेटा डिलीट हो जाएगा. आप बस उनको ट्रांसफर कर. जैसे स्कूल में बच्चे का रिकॉर्ड कभी नहीं डिलीट होता है. कोई बच्चा स्कूल से ट्रांसफर लेता है, so you only give a TC, so but you never delete the old data of this thing. So in similarly here also don't delete. Maheshwari is asking that I have already uploaded student data. One error is there. How to change that error after uploading student data? So when you're uploading student data, we showed you that in case there are error, there are different kinds of error. कि स्कूल का कोड मैच नहीं हो रहा है, या तो उसके बच्चे का आपने जेंडर ठीक से नहीं डाला है, या तो उसके डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट ठीक नहीं है, या तो डुप्लीकेट डेटा है. सो यू कैन एक्चुअली डू दैट थिंग. तो ये चीज आप कर सकते हैं. पूनम कोकने जी, आई सॉ योर मैसेज, थैंक यू सो मच. Then sir, we have to, then there's a question from Manish ji which says when we registered that school, our school code was 20721 and now it is this thing. So I'm not able to upload the student data. One data says that the school code is not matching. So what you need to do is to call the call center of Khelo India, change your school code so that they will change the school code from 20721 to 41087 जो आपका नया कोड है,
उसके बाद कर सकते हैं, बिकॉज आप अपने आप स्कूल का कोड को नहीं चेंज कर सकते, स्कूल का कोड हैज टू बी डन बाय सेंट्रल टीम, उसके बाद आप ये कर सकते हैं। सेकंड, फिर रजना ठाकुर इज आस्किंग, क्या खेलो इंडिया में सभी की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मिडिल स्कूल को भी? देखिए ये जो है ये एक्चुअली कंपलसरी, ये खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट प्रोग्राम पूरा ऑल इंडिया का प्रोग्राम है। Whichever board you belong to, it doesn't matter. CBSE, because the child belongs to the country, does not belong to any board. तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज फॉर द एंटायर कंट्री। तो आपका जो स्कूल है, आप उस स्कूल को रजिस्टर कीजिए और बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं। ये क्लास 1 से लेकर 12 तक का है। आपने बताया कि ये मिडिल स्कूल क्या है, अगर आप मिडिल स्कूल के हैं तो मे बी आप क्लास 6 ऑनवर्ड्स हैं, तो आप उसको रजिस्टर कीजिए। 6 to 8 K. Tomorrow, when you add more number of classes, you can add that also. Then it says, how do you attend, download all lectures? Anyway, that's, sir, personal details कहाँ send करनी है? Personal detail कहाँ send करनी है? Kamal Bansal is asking. You don't need to send any personal detail to anyone. So what you need to do is to download the Khelo India app, Khelo India bracket में school version वाला app को download कीजिए। You fill up the personal profile yourself, personal detail, ये आपका पर्सनल डेटा है। जैसे आप कहीं पे मान लीजिए naukri.com हो गया, फेसबुक हो गया, कहीं पे वो आप खुद ही डालते हैं अपना पर्सनल डिटेल को। इस केस में बस ये चीज है कि क्योंकि आप ई टीचर हैं, आप स्कूल 1 में अभी हैं, 5 साल के बाद स्कूल 2 में चले जाते हैं, तो आप अपना पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करते हैं ऐप के थ्रू। स्कूल जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि ये जो पी टीचर है वो हमारे स्कूल को बिलोंग करता है, वो प्रिंसिपल कैन एक्चुअली से। सो इसीलिए हम पी टीचर्स को अपना प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए बोलते हैं, प्रिंसिपल्स को कहते हैं आप टीचर को ऐड कीजिए अपने स्कूल के लिए। जिस दिन वो पी टीचर छोड़ के चले जाते हैं उसको डीएक्टिवेट करना है। डेटा कुछ लॉस नहीं होता है, बस इतना ही होता है। फिर उसके बाद है दुष्यंत कुमार डीपी है। मेरा हिंदी पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं पढ़ लेता हूँ फिर भी। खेलो इंडिया स्कूल फिटनेस प्रिंसिपल लॉगिन से स्कूल के द्वारा बच्चों की अगली कक्षा में प्रमोट करने में बहुत दिक्कत आ रही है। सबसे ज्यादा समस्या जिन बच्चों की डेथ हो चुकी है, उनकी बच्चों को कैसे हटाए, और जो बच्चे कक्षा 10 पास स्कूल छोड़कर जा चुके हैं उन्हें हटाने में आ रही है। अच्छा, तो इसको सिंपल चीज है, तो ये मेरे समझ में आ रहा है कि शायद आपके स्कूल में 11th और 12th नहीं है, क्योंकि आप जब प्रमोट करते हैं बच्चों को, आप एक तो 2 स्टेप में करना है। पहले कि सारे बच्चों को प्रमोट करना है, कुछ बच्चों को, फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ बच्चों का सेक्शन चेंज होगा। मान लीजिए कुछ ए में है वो सी में चले गए, सी का बी में आ गए, तो आप इंडिविजुअल बच्चों को फिर जाके आप उनका सेक्शन को चेंज कर लीजिए। फिर नेक्स्ट सिचुएशन है कि कुछ बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए हैं, जैसे आपने लिखा है कोविड में उनकी डेथ हो गई है, जो भी है, तो आप उन बच्चों को आपको डिलीट नहीं करना है, आप उनको प्रमोट कर लीजिए, और ये सॉरी ट्रांसफर वाले उसमें डाल दीजिए। तो क्या होगा, बच्चे आपके सिस्टम में रहेंगे लेकिन वो ट्रांसफर होकर रहेंगे, और लेकिन उनके असेसमेंट में दिखेगा नहीं जब हम असेसमेंट करने जाएंगे। तो ये चीज है। जब 10th पास करके आगे गए हैं, 10th खत्म करके आगे गए, तो आप उनको अगर आपके 11th क्लास नहीं है स्कूल में, आप उनको बस ट्रांसफर कर लीजिए, क्योंकि सिस्टम के हिसाब से जब वो प्रमोट करते हैं अप टू 12th के बाद वो सिस्टम से गायब होता है, लेकिन रहता है, लेकिन स्कूल से गायब हो जाता है। मेरे ये समझ में आ रहा है कि आपके स्कूल में 11th और 12th नहीं है, so you just transfer all the children who are, once you promote you just transfer them, so once you transfer तो 11th का डेटा क्लियर हो जाएगा। I hope it has helped you. भारती शर्मा is asking बैलेंस टेस्ट किस एज ग्रुप में स्टार्ट है, क्लास 7 के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, ये आप खुद बताइए। मैंने आपको बताया कौन सा टेस्ट कौन सी क्लास के लिए, मैंने आपको ये बताया था कि बैलेंस जो है क्लास 1 to 3 के लिए। अनोनिमस अटेंडी कह रहे कि सर फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट का क्या बेनिफिट है, ये अच्छा क्वेश्चन है। बैलेंस जो है, बैलेंस इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है थ्रू आउट आवर लाइफ। जब 90 साल का हो जाते हैं, 100 के भी हो जाते हैं, तो हमारा बैलेंस सही होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम स्पोर्ट्स कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो बैलेंस के बिना कोई भी स्पोर्ट्स खेल ही नहीं सकते। आपको अगर बैट्समैन बन रहे, बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डर हो, हर चीज में बैलेंस की जरूरत है। गोलकीपर हो, हर चीज में बैलेंस की जरूरत है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन में भी वॉक करके जाना है, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे स्ट्रेट लाइन में वॉक नहीं कर पाते हैं,
बिकॉज उनका बैलेंस ठीक नहीं होता है। तो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो यंग एज में ही डेवलप होता है। क्लास 1 to 3 बहुत सही एज है जब डेवलप होता है। सो बेसिकली हम प्री नर्सरी से लेकर क्लास 3 के बीच में लोगों के बैलेंस बैलेंस पे फोकस करते हैं डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेटर पॉइंट जब हम बुढ़े हो जाते हैं, जब हम सीनियर्स में आ जाते हैं, फिर से हम बैलेंस के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, जिससे स्टेयर्स क्लाइंब करते हैं या अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। तो बैलेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है इसलिए। रियल मी 3i में वेस्ट वेस्ट ओडिशा के किसी स्कूल के बच्चे अगर खेलो इंडिया में रजिस्टर हुए हैं तो कहाँ पर फिटनेस टेस्ट देंगे? फिटनेस टेस्ट आपको ही देना है, मतलब किसी भी स्कूल है आप ऑल ओवर इंडिया का, आप ये जो ये एप्लीकेशन और पोर्टल यूज करके आप अपने स्कूल के बच्चों का फिटनेस टेस्ट करेंगे। जब आप करेंगे उनका डेटा साई के पास आता है, अगर कोई टैलेंटेड बच्चा है तो उसको वो पिक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास डेटा नहीं आता है, आप इसके थ्रू आ जाते हैं, ठीक है। मोहम्मद इब्राहिम इज आस्किंग, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड downloaded student data, but when I go for test, the app does not support and shows that your session is expired. ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जो आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आप कॉल सेंटर में कॉल करके बताइए कि जो सेशन है वो एक्सपायर्ड है। एक्चुअली कोविड के बाद आप ये सोचिए कि जैसे सीबीएसई, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि whenever you have a new session starting, physically it has to be started, so system cannot start it automatically. So someone in sports authority has to start the session for this particular year, calling it as 2021, 22, 23 and term 1. Once that happens is this thing. So I understand there is a problem that you're facing and you are not able to do it. So please contact the call centers. They should be able to do it. Unfortunately, my team does not handle it right now. Till April 2021 we were handling it. After that we are not handling it. So even now so you will have to talk to Sai. Hello. Sir, कितना टाइम है अभी? हो गया? We can bind up, sir. We are already. Yeah. तो जो ये बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस है, तो ये आप ब्रॉडली ये चीजें और कुछ मुझे ऐसे कुछ लग नहीं रहा है कि ठीक है। तो आई थिंक ब्रॉडली ये सारी चीजें, बाकी ठीक है। किसी ने पूछा था कि फिजिकल प्रॉब्लम्स अगर है, फ्रैक्चर और लो बैक वगैरह प्रॉब्लम, तो टेस्ट क्या लेना है। आप ये इसको डिवाइड कर लीजिए कि कोई बच्चे का कोई एक पर्टिकुलर चीज में प्रॉब्लम है, अपर बॉडी में प्रॉब्लम है, तो जैसे हाथ में प्रॉब्लम है, पुशअप्स मत कराइए, बट आप पार्शियल कर्ल तो करा ही सकते हैं उसमें। लेकिन वो बाकी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर लेग में प्रॉब्लम तो उसके हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। Okay, then sir, we'll just go through the question answer. If anything is there, any important questions are there, we'll take up. Okay. Yeah. Thank you. So participants, I hope that you have enjoyed the session, and as you can see in the chat box, the positive responses are there about the session. So thank you for listening, and once again thank you to Sujit Paningre sir for a wonderful, very informative session, detailed session actually, with a lot of videos and examples. So thank you sir, and I would express my heartiest thanks once again on behalf of organizing team from Sai LNCP, on behalf of E-Khel Pathshala team from Delhi, and the our principal sir, Dr. G. Kishore sir. Thank you so much for delivering such a wonderful session. Thank you. And thank you so much. Thank you so much. I would like to thank Mr. Ankur Sharma as well, who has came and delivered, contributed in the session. So thank you, Mr. Ankur, for joining. And thank you, sir. Thank you. Please. So, and once again, participant, thank you so much. We'll have another session today at 3 p.m. as Suji sir already mentioned. So please join that session, and it will be a sequence follow-up of this session. So we'll see you in the next session, and then poll has been launched about the session. You can give your valuable feedback about the session. And then once again, thank you everyone for joining and sharing your time. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much.